Namaste. This is Priyanka Singh and today we will be learning 15 minutes yoga flow for beginners. So चलिए मैट पे आ जाते हैं और आसन की शुरुआत करते हैं. Before starting our asana, we will energize our channels with Nadi cleansing pranayam, which is known as Anulom Vilom pranayam. It is also known as alternate nostril breathing. तो चलिए देखते हैं अनुलोम विलोम कैसे करते हैं. अपने लेफ्ट पाम को अपने घुटनों के ऊपर रख दें, पाम फेसिंग अपवर्ड. राइट पाम से पहले अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे एंड राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, मतलब सूर्य नाड़ी को हम एक्टिवेट करेंगे. नाउ क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल and exhale through left nostril. Inhale left nostril. Close your left nostril. Exhale right nostril. This completes your one round. Let's repeat the same for a minute. We will end the pranayam with exhaling from the right nostril. चलिए अब बढ़ते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर. Exhaling, drop your neck. Then धीरे से inhale करते हुए अपने गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं. Now rotate your neck clockwise for 3 times. Then anti-clockwise thrice. हर एक मोशन को अपने सांस से जोड़कर रखना है. वार्म अप इज फॉर lubricating our joints. Now let's go for our shoulders. दोनों एल्बो को साथ में लेकर आए और धीरे से सांस भरते हुए पीछे की ओर. एक्सेलिंग फॉरवर्ड, इनहेलिंग बैक. 3 clockwise and 3 anti-clockwise. Now let's go for wrist. Same 3 बार clockwise, 3 anti-clockwise. Let's go for our ankles. For balance, you can take the support of any wall, or if you are doing outside, you can take the support of any tree. Let's lubricate our knee joint. 3 clockwise and anti-clockwise. Let's warm up our calf muscles. Inhaling, lift your heels up. Exhaling, put it down. For balance, look straight at one point. This you can do for 10 times. Let's warm up our spine in Tadasana. Inhale,
करते हुए हील्स को ऊपर उठाएंगे, पाम को अपवर्ड फेस करते हुए और पूरे स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। जस्ट बी देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स, कीप लुकिंग एट वन पॉइंट। We'll do it thrice, exhaling down. स्पाइन को साइड बेंड करना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए साइड बेंड। इनहेल सेंटर, एक्सहेलिंग बेंड साइड। 3 राइट साइड, 3 लेफ्ट साइड। Let's start the flow. इनहेल करते हुए हाथों को बाजू से सर के ऊपर नमस्ते, एक्सहेल करते हुए चेस्ट के सामने। नाउ इनहेलिंग बैंड बैक इन हस्तोत्तानासन। एक्सहेलिंग गो फॉर चेयर पोज, उत्तानासन। मेक श्योर यहाँ पे आप अपने टेल बोन को टक इन करें। धीरे से इनहेल देयर एंड एक्सहेलिंग बेंड फॉरवर्ड, लुक स्ट्रेट, then gently exhaling go back and come up in plank, chaturanga dandasana. Look straight, tuck in your tailbone. Inhale here and be there for a few seconds. Gently bend your knee, touch it to the mat, chest and chin on the mat in Ashtang Namaskar with exhalation. Inhaling, come up in Bhujang. Gently drop your neck back and be there, feel the stretch. धीरे से अपने फुट को प्लेस करते हुए अपने टेल बोन को पीछे की तरफ मूव करते हुए अधोमुख स्वानासन में जाएंगे। Now lift your right leg up, push your spine towards the knee, gently bend it and exhaling, place it in between the palm. Inhaling, come up in warrior 1, Veerbhadrasana 1. Make sure your front leg is in 90 degree. Palm in namaste over the head, look straight for balance. Exhaling, go for Veerbhadrasana 2. Look straight towards your right hand, chest in between. Then inhale, go back in reverse warrior. Look up, just balance and feel the stretch. Now gently place your right arm on your right thigh and left arm extended straight in extended triangle and feel the stretch. Place your palm on the mat in Ashwasanchalanasana, runner up pose, and go back with exhalation in downward facing dog. Walk here keeping one knee bent, other straight. Just alternate bend and straight. This is to relax your calf muscles. Adjust your foot. Now again inhaling, lift your left foot. Be there, feel the stretch, pushing your spine towards the knee. Fold your leg and keep it in between the palm. Look straight in runner up and inhaling, come up in warrior 1. Look straight and feel the stretch. Keep a smile on your face and feel the stretch. Gently go for Veerbhadrasana 2. Here make sure your chest is in between and gaze at front. Inhaling, reverse warrior. Look up, just feel the stretch and balance. Exhaling, place your left arm on your left thigh, right arm stretch and look up in extended triangle. Now gently place your palm on the mat in runner up pose and exhaling, go back in downward dog. Be there and walk. Keeping one knee straight, other bend, just walk there.
to relax your lower body. Inhaling, pull yourself in Chaturanga Dandasana, plank. Just look straight, bend your knee, just chin on the mat in Ashtanga. Gently place your foot and come up in Bhujang, Cobra pose. Just drop your neck and feel the stretch on your upper body. Again, place your toe and go back in downward facing dog. Push your spine there, gently. Come up in Uttanasana, forward bend. You can keep your palm on your chin bone and then inhaling, gently come up in Uttanasana, chair pose. Remember to tuck in your tailbone. Make sure your knee is behind your toe to make sure your knee is safe. And again, inhaling, bend back in Hastottanasana, exhaling Pranamasana. Let's sit on our mat. धीरे से आराम से आप किसी भी मेडिटेटिव पॉस्चर में बैठ सकते हैं, आइदर सुखासन, पद्मासन, वज्रासना और अर्ध पद्मासन। दोनों हथेलियों को बाजू से आराम से ऊपर खींचते हुए पर्वत आसन में फॉर आवर लेटरल स्ट्रेच ऑफ आवर स्पाइन. इनहेलिंग, धीरे से बैक बेंड एंड एक्सहेलिंग, बेंड फॉरवर्ड. Again, inhaling, come up, exhaling, twist to your right, inhaling, center, exhaling, twist to your left, inhaling, center, keep it slow and feel the stretch, exhaling, bend, inhaling, center, exhaling, bend. Now let's go for our lying down asanas. Gently turn to a side and lie down on your spine, supine posture. Now bend your leg. Try to place it near your hips, and inhaling, lift your hips up so that your chest gets tucked into your chin. Place your feet nearby your glutes. Gently inhaling, lift your glutes up. Chin tucked in hoga chest se, and you can interlock your finger there. Be there in Setu Bandhasana. Exhaling, place your hips down on the mat. Now again, we'll repeat the same. Inhale, lift your hips up. Be there, feel the stretch. Exhaling, keep it down. Now gently straighten your leg. Slide down and relax in Savasana. पूरे शरीर को अपने ढीला छोड़ दें. Palm facing upward, toes relaxed, full body relaxed. Relax your face muscles. Relax your forehead. Let's relax our muscles, our joints, our mind. Just be here for next 5 minutes and relax yourself. Release all your stress and worries. Now gently turn to your right side and lie down in Dandasana, keeping your legs straight. Now take the support of your left palm and gently come up. Let's end the session with Shanti Mantra. Place your palm in Namaste. धीरे से अपनी आँखों को बंद करें. गहरी सांस भरें. ओम का उच्चारण सांस को छोड़ते हुए करेंगे. ओम.
शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हथेलियों के आपस में घिसें। जैसे ही हथेलियों में गर्माहट महसूस हो, हथेलियों को अपने आँखों के ऊपर आराम से कप बनाते हुए रखें। वहीं पे अपनी आँखों को 3 से 4 बार खोलिए और बंद करेंगे। धीरे से हाथ को नीचे करें और हथेलियों को देखते हुए आँख को खोलें। नमस्ते। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी और भी जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल ट्राया हेल्थ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।